I wish all my students a very good day, and we are going to meet again once again. So today the topic which we are going to cover, that is pronoun. About the pronouns we have already learned in class 6th, but today we are going to know more about it, its types, its definition. You can see here what is pronoun and its types. So pronoun is a word that replaces, relates or emphasizes a noun or equivalent is called pronoun. मतलब कि जो भी noun हमारे चारों तरफ है, like in noun वाले chapter में we learned about proper noun, common noun, these things. So for a boy I apply he, for a girl I apply she, for animal I apply it. So we can understand कि what is a pronoun. So once again I tell you कि a word that is referred to a noun, that is called a pronoun. So we can see the type of pronouns here. First of all comes personal pronouns. When you are learning about personal pronoun, you need to remember that the definition is hidden here in it only. The answer is here in it only. Personal pronoun is referred to the person. If we talk about person, the words which are referred to the person, they are called personal pronoun, like I, we, you, they, he, she, etc. Personal pronoun which are referred to the person, not for the objects, they are personal pronouns. Impersonal pronouns, it indicates mainly the non-living things and in human beings, so that is one word only, it is applied for the animals, for the non-living things it becomes impersonal pronoun. Now we come to the next, that is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun में हमको याद रखना है कि this, that, these, those, 4 words are there, और 4 words में भी one condition is there, because demonstrative pronoun and demonstrative adjective, they both are same. When you will come to know about demonstrative adjective, they both are same. So यहाँ पर ध्यान रखें कि demonstrative pronoun जब हम पढ़ते हैं this, that, these, those, इनके ठीक बाद helping verb आना चाहिए. अगर इनके ठीक बाद helping verb आ रहा है कि this is my doll, that is my room, these are the players, अगर इस तरीके से आई एम रेफरिंग एन एग्जाम्पल कि मेरे दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो ये प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है. लेकिन अगर इसके ठीक बाद कोई भी नाउन आती है कि दिस डॉल इज माइन, दैट रूम इज माइन, दीज स्टूडेंट्स आर इन क्लास दिस दिस दिस, सो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा प्रोनाउन, it becomes an adjective. तो ध्यान रखें demonstrative pronoun when we are learning, so this, that, these, those, but इनके ठीक बाद कोई भी helping verb आना चाहिए. Next we come on to the distributive pronoun, जो distribute करे, each, either, neither, etc. distributive, each, either, neither, optional है ये. indefinite pronoun, indefinite जहाँ पर हमको person का पता नहीं लगता कि कौन है, यहाँ पर it signifies the sense of the subject or object indefinitely without any specification की. वही जो definition इसकी बता रही है कि यहाँ पर हमको पता नहीं पड़ता subject कौन है, करने वाला कौन है, doer कौन है. So examples are given here, one, any, some, none, all, etc. Now we come on to the reciprocal pronoun. अब reciprocal pronoun क्या होता है, जो हम वापस return get करते हैं, receive करते हैं, that is reciprocal pronoun. each other, one another. अब students you need to remember here कि each other and one another में difference क्या है. each other में you need to remember each other. When you are talking about 2 nouns, then we apply each other. But when you are talking about more than 2 nouns, then we apply one another. कि हम यहाँ पर example ले लेते हैं कि Ram and Shyam, they both are brothers, they are fighting with each other. And one more example कि Ram and his 4 brothers are fighting with one another. तो ध्यान रखें कि जब 2 नाउन आ रही है, 2 nouns are there, then you have to apply each other. But when nouns are more than 2, then apply one another. Reciprocal के बाद reflexive and emphatic reflexive and emphatic में याद रखना है हमको कि जहाँ पर हम self लगा देते हैं, selves लगा देते हैं, that becomes reflexive and emphatic. Reflexive and emphatic में क्या होता है कि emphatic subject के ऊपर एम्फेसाइज करती है, लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव एक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेनली एंड में आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन मेनली सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद भी यू कैन फाइंड इट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक. वी विल सी मोर अबाउट इट इन द चार्ट.
Next come relative pronoun. This is very much important students, because relative pronoun is the type of a conjunction कि जो sentences को जोड़ते हैं, sentences को जोड़ने का काम करे, connector का काम करे, that becomes a relative pronoun. Examples are given here: who, which, that, what, whatever, etc. So once again you have to remember they come in between the sentences, two sentences, and it mainly works like a conjunction. Interrogative pronoun and demonstrative pronoun, which I told you earlier. So need to remember कि when you are learning interrogative pronoun, you need to remember a WH word should be there, who, which, what, and it should be followed by a helping verb. Once again you need to remember कि अभी who हमने देखो रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ा तो यहाँ भी हु, विच, व्हाट सब चीज़ें आ रही हैं, और जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो वही हु, विच, व्हाट ये सेंस आ रहा है. अब डिफरेंस क्या है बच्चों की, रिलेटिव प्रोनाउन जब आप पढ़ते हो तो रिलेटिव प्रोनाउन में ध्यान रखें कि ये एक कंजंक्शन है, लेकिन जब आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कंजंक्शन नहीं है, इट इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, और इसके ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा, आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, कुछ भी आ सकता है हेल्पिंग वर्ब जो भी इंग्लिश में अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन की अभी जो लिस्ट आई एम सेंडिंग यू अ लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सो इन दैट लिस्ट इन PDF फॉर्मेट यू कैन फाइंड कि व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन मेनली शोज द पोजेशन कि कोई चीज़ मेरी है या किसी और की है, उसको पोजेशन बोलते हैं. सो दैट बिकम्स पजेसिव प्रोनाउन कि आई का आई, मी, माई, माई, माइन, यू, योर, योर्स, दे, देम, देयर, देयर्स. तो इस तरीके से जो थर्ड नंबर पे, थर्ड प्लेस पर आता है, दैट इज पजेसिव प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, you need to see the assignments to download the PDF, and in the PDF a chart is given, it will help you more. And if you find any difficulty, you can comment in the comment box or you can ask directly. Thank you students, thank you very much.